My dear friends, there are two aspects of instructions or when we plan the curriculum. There can be many ways we can categorize the things, but broadly speaking there are two very important things when we design the curriculum, and all of you are the implementers of the curriculum, and some of you might be involved in the design of the curriculum also. So when we design the curriculum, we overall plan what kind of experiences should be given to the students so that they are able to perform in the industry, in the world of work, ताकि वो काम की दुनिया में जा पाएं. You are all the implementers of the curriculum, and we design the curriculum for what? So that they are able to, especially polytechnics and engineering colleges में जो diploma and degree देते हैं हम लोग, so that we are able to place the student appropriately in the industry. And when we say placement of the students in the industry's की requirement क्या है? They should be having sufficient knowledge, and they should also have hands-on experience. They should be able to do, they should know, and they should be able to do also. And I am sure my colleagues must have talked to you about all the three domains, that is cognitive, psychomotor, and affective domains. Right? I will not go in the details in this session, but then all the three domains are very, very important. Your knowledge without your ability to do the things is almost a waste. I know how to swim, but you put me in the water, I drown. उसका क्या फायदा है फिर, है ना? So we require that. And often in the polytechnics and in the engineering colleges also, this second aspect of the major domain of your practicals, where the student learn how to do things with their own hands, has certain challenges, and very often it is neglected also. Students take it for granted that we will pass. They focus more on the theory, which is very important, but it is equally important that they focus on the practical, because in the industry ultimately you will be offered a pool of water and you will be asked to swim also. And when they come to the campuses, they like to see that you know and you are able to do. And how do you ensure that whatever practicals, we will talk in details in this 1 hour or 30 minutes, what kind of skills, what kind of psychomotor abilities are there in your curriculum? How do you impart that, and how do you evaluate? This whole program is on evaluation and setting up a question paper. How do you evaluate? My colleagues have talked to you at length about, or they will be talking tomorrow also, about how to test the student, how to evaluate the student on their performance relative to their cognitive ability, ताकि उनकी सोचने की, उनकी जो उनका ब्रेन की एबिलिटीज जो हैं, उसके लिए उन्होंने काफी डिटेल में आपसे बात करी है. Yes, similar concepts are also applicable for the practical, but there are certain special treatments required, because student evaluation is a very important component of any educational program. Your whole education program revolves around student evaluation. If I let us say so and so polytechnic and so polytechnic, we compare a very, very good polytechnic which is consistently producing very good engineers who are well placed. I am talking about an engineering college or an IIT or NIT. One of the major differences is the way they evaluate the student, the way they make the assessment of the students. The student have to be always on the toes in a good system, and they have to work very hard there. That's what makes them world-class engineers. Yes. In this session, I'll be focusing largely on evaluation of practical work. We will try to discuss what kind of practical work are involved, what are the components of practical work in the curriculum, and what are the present practices, what are the challenges. I want your wholehearted participation in this session. Wherever you require any inputs from my side, I want to know, I will assume certain things
it happens in pedagogy. I assume that you are understanding everything, and whatever little I know, I am able to impart and go back. Unless and until whatever I am going to talk to you, you are able to bring some practical changes in your everyday teaching learning process. This course, every session in this course or other courses also is useless. Isn't it so? For example, if I teach a student how to make a water clean from a particular impurity, let us say this is a water which has arsenic contents और इसमें फ्लोराइड ज़्यादा है या ABC, this is a hard water. If the student is not able, मैंने उसको पढ़ा दिया, लेबोरेटरी में भी करवा दिया. If the student is not able to do the test, whatever we may do, it is useless. No, ultimately he has to test and he has to give a treatment also. What kind of treatment is required? बैक्टीरियल कंटेंट्स हो सकते हैं पानी के अंदर, तो हाउ टू टेस्ट इकोलाई है या और कोई प्रॉब्लम. आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज आई एम ए सिविल इंजीनियर. सो इफ यू आर एबल टू टेस्ट एंड फाइंड आउट कौन से केमिकल, कौन से फिजिकल, कौन से बैक्टीरियोलॉजिकल, कौन से रेडियोलॉजिकल, इसमें कौन कौन से पोल्यूशंस हो सकती हैं, टेस्ट एंड आइडेंटिफाई, एंड देन with your cognitive ability, you know, okay, this is how the treatments are available, and you are able to execute the treatment so that the end user, in your case it is the industry, end user is able to drink the water safely without encountering any kind of problem. Yes or no? Unless the student is not able to do whatever we may teach, whatever we may do, whatever laboratory work le leng, there are so many problems there, there are so many challenges there. Ultimately, we should be able to deliver what the industry wants from our students. And at the very outset, I would like to share a small video with you. I am not taking a video from the engineering area. I am taking because I know this group is very, very diverse. You are from different backgrounds. But try to see what psychomotor, our body is like a motor which runs with a psycho. Without brain, our body will not function. Yes, we will be lunatic. We will have everything is okay, but our body is not functioning because my brain is not giving commands. So it is called psychomotor abilities. So in this small video, you will see the perfection in the psychomotor ability of the person. Yes, ready for the video? Yes, sure. Okay, it is about the football. प्रैक्टिकल है. यू हैव टू, आपको बड़ी थ्योरी पता है, ऐसे गोल हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है. अनलेस यू आर एबल टू मेक ए गोल, all theory is useless. Ultimately, you have to make a goal and see the perfection shot. It doesn't come just by one go. It comes with consistent practice. And I usually say there are 3 principles in honing a practical skill. कोई भी practical skill है, चाहे वो communication है, चाहे वो swimming है, चाहे वो carpentry है, चाहे वो welding है. There are 3 principles. I will tell you 2. The third you will tell me. Okay? The 2 principles of imparting or developing practical skills in the student are 3. I am going to tell you 2. The first one is practice. The second one is practice. The third one you will tell me. More practice. Yes? प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता. आप जितने मर्जी आपकी बॉडी स्ट्रांग हो, कुछ हो, मैं आपको कल बोलूं कि आपको एक मैराथन दौड़ लगानी है, आपकी सभी क्रैम्प्स हो जाएंगे. बट विद प्रैक्टिस, विद 6 months टाइम, 1 year टाइम, यू विल बी एबल टू रन. मे बी योर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. एंड द कोच गिव यू सफिशिएंट प्रैक्टिस. As teachers, you give sufficient practice in the laboratories, in the workshops, in the drawing classes, and ensure that the coach ensure that in the match he will be able to make a goal. You ensure that the students are able to make the things in the industry with their own hands. Yes, simple सी इक्वेशन मैंने बनाई है और ये आप इस मैच को एंजॉय, इस शॉट को एंजॉय करिए.
The way they look at the ball, look at the way he's got it. He's got it in his hands. He's having a good, careful look about it. It's placed absolutely perfect. Look at that. I mean, everything's set that he's going to hit it. I just wonder if they're kidding us on. It's what, all of 30 yards, Andy? Well, why not? It's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up. Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing! Well, that was what was missing in Euro 96. That is quite incredible. Not so sure about the goalkeeper's position and what he saw, but we can't deny the quality of the strike. It had power, it had bend, it had accuracy. Watch this. Starts way to the goal. That's 2-3 yards wide and just clips the inside of the post. That is quite a magnificent free kick. I'm not so sure we'll see one better than that for many a year. And the ball swings and goes in there. And there is a final goalkeeper. Absolutely stunning shot. Barthez, well, he was as much a spectator as I was. Isn't it so beautiful? Yes. And can you imagine how much practice it requires? Yes. It is a simple psychomotor skill. Your psychology, your physiology, everything plays. Your attitudes also, your determination, your commitment, your, everything works ultimately goal. Ultimately, the industry requires these students should be able to perform on the shop floors. Yes or no? Yes. And to have that, sufficient practice is required. And you must make sure, the coach makes sure that when a situation will come, my student, my player will be able to do this. And how do you make sure? By evaluation, by the student evaluation. Yes or no, sir? I am not going to go in details about the taxonomy. My colleagues must have talked to you. I am not going to dwell too much on this. And I will simply say that challenges, when we talk about the challenges in developing the practical skills in the student, largely there are the skills I can develop if I am skilled enough. We do not have that trained many times. For all the practicals, हमारे पास complete, fully trained laboratory assistants, instructors, the people, the drawing teachers, the industrial trained teachers for the project work available नहीं, raw material नहीं है, time कम है practical class के लिए, they are not able to execute the practicals. There can be many challenges. You know it well, so I will not go in the details of that. I will focus on the evaluation part more. So when we talk about the curriculum, I said second component. First is cognitive, developing the knowledge of the student. Second is know-how. They should be able to do things with their own hands. And these are the four components which are kept in the engineering courses. Drawing, laboratory, workshop, project work, and sometimes we call it also industrial training or internships. Nowadays we use the term internships. So these are the four components which help the student in developing the practical skills, their psychomotor abilities, so-called. And each one has their own objectives. Learning outcomes की बात करें यदि हम लोग, they have their own objectives. Drawing का काम, your evaluation will depend on for what it was kept in the curriculum. ये subject को, ये topic को रखा क्यों गया? Why we have kept this topic why we have kept this subject in the curriculum, and what are the objectives? Learning outcome क्या हैं? If you are clear about the learning outcomes, you will rarely go wrong in student evaluation. आपका यदि learning outcome क्या है, वही तो हमने evaluate करनी है, वही आपने पढ़ाना है. Whatever the learning outcome जो बच्चे से expected है after the completion of the course, if it is very clear to your mind, it is well spelled, you are going to execute that in the classrooms, and then you are going to evaluate whether he is able to achieve that or not. Simple सी चीज है. Yes, and these are the four components. Drawing के objectives अलग हैं. It is a language of the engineers. Drawing is a language of the engineers.
हमारे इंस्टीट्यूट में भी आई बीन हैंडलिंग द स्टेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम हियर इन दिस इंस्टीट्यूट. I was highly impressed by the design of the city by Lee Corbusier. I took a special subject. I audited the subject in way back. I did my degree in 78 to 82 in civil engineering from Thapar. So I got a chance to study the master plan of Chandigarh at that time. So that was not a regular course, but I took that course, in which I came to know the how imaginary, how creative Lee Corbusier was, and I was touched by some of the sketches he used to make. Basically, I tell you, he was an architect, and architecture जो branch है engineering की एक, initially that has come from the artists. Yes. So initially, artists they used to draw the windows and they used to draw the doors. They used to draw the streets ऐसी लगेगी, देखने सुंदर ऐसी लगेगी, and slowly the things developed into the complete branch of architecture. Okay. And मेरे को नाम भूल रहा है अभी, बड़ा फेमस आर्किटेक्ट थे यूरोप के, एंजिलो, क्या नाम, ऐसे कुछ नाम था. Anybody can recall the name of the architect, please? Unmute and you can say. Michael Angelio, ऐसे कुछ नाम था. He was an artist and he became a world famous architect. So I was coming to the Lee Corbusier, who designed the city beautiful. We call it City Beautiful Chandigarh. I was amazed his creativity, his thoughts, and then Chandigarh sector 19. If you are get an opportunity ever to visit Chandigarh, you will find some of his work still there. There is a heritage center there, which they keep the sketches made by him. And he used to let us say go on the site and say, "Kisko aise kar lo, aise kar lo." Some of those sketches I have framed and kept it in this institute also. You will, if you go around, you will find them in the corridors, in the entrances of some of the buildings here. Somebody has written something here. Lee Corbusier is the architect from Chandigarh. I am talking about Michael Angelio. आपको याद आ गया नाम उनका भी. Yes. So drawing के objectives हैं. The student should be able to read and interpret the drawings to execute the work. And my dear friends, our students are not able to read, not able to interpret. Drawing पढ़ के तो काम करवाएगा ना शॉप फ्लोर पे, एंड ड्राइंग बनाएगा इंजीनियर, तभी तो वो एग्जीक्यूट होगी वो. सो दिस इज वन. लेबोरेटरी का क्या ऑब्जेक्टिव है? ब्रॉडली स्पीकिंग, इट इज टू स्ट्रेंथन योर थ्योरी. व्हाटएवर जो आपने थ्योरी में पढ़ा, आपने उसको वेरीफाई करा in the laboratory to prove that whatever we have studied is actually happening. So you believe and it remains in your mind all your life. थ्योरी आपको भूल जाएगी जो आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करे हैं. फॉर दैट मैटर एनी प्रैक्टिकल वर्क, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे वो लेबोरेटरी है, चाहे वो वर्कशॉप है, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क है, यू विल ऑलवेज रिमेंबर इवन आफ्टर 20 years. उस लेबोरेटरी में मैंने ये टेस्ट करा था, ये डाला था. मे बी यू विल मे फॉरगेट द सॉल्ट, वो आप रेफर कर सकते हैं, बट थ्योरी को भूल जाते हैं हम लोग. प्रैक्टिकल रिमेन्स विद यू बिकॉज यू डू थिंग्स विद योर ओन हैंड्स. यस. तो लेबोरेटरी में हम लोग वेरीफाई करते हैं एंड दैट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ. जो हमने पढ़ा वो ठीक पढ़ा, यहाँ पे प्रूव हो रहा है वो. एंड आल्सो इट डेवलप्स द एबिलिटी इन यू टू ट्राई एंड कम आउट विद न्यू थिंग्स. मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इनोवेशंस हैव कम थ्रू हिट एंड ट्रायल. आपने पढ़ा ना हिट एंड ट्रायल मेथड, वो बहुत सारी चीजें हमने हिट एंड ट्रायल से करी. समथिंग वर्क्स आउट एंड देन वी प्रिपेयर द थ्योरी फॉर इट कि कैसे वर्क करा इसने. यस और नो? सो लेबोरेटरी वर्क में यू गेट ए चांस, यू नो कि कहाँ पे क्या गलत हो सकता है. यू ट्राई टू सी द थिंग्स एंड यू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स अगेन. एंड ये रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे होने चाहिए थे. दिस इज हाउ द रिजल्ट्स हैव कम. इट शुड हैव बीन लाइक दिस, माय कर्व शुड हैव बीन लाइक दिस, एंड देन यू ट्राई टू गो द रीजनिंग एंड डाउन. It strengthens your cognitive abilities also. The purpose of the workshop practice is to develop manual skills in the students. Manual skills. Laboratory में manual skill
बनती हैं, लेकिन पर्पस इज टू वेरीफाई एंड टू स्ट्रेंथन योर थ्योरी. ड्राइंग इज टिपिकली ए मैनुअल स्किल. यू हाउ गुड यू आर इन द ड्राइंग. इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए. वर्कशॉप में little bit of cognitive ability is always required, but largely it is developing the manual skills. You learn how to cut a piece using a hexa, using this thing chisel. You operate with machines and tools, and you work on the materials to produce certain things with your own hands. This gives you confidence. This gives you an idea when you work on the shop floor, when you get the work executed from the skilled or semi-skilled worker, what it involves to do the things. मैंने मैसनरी नहीं करी, प्लम्बिंग नहीं करी, but in my workshop which I did in 78 in first year has given me sufficient idea कि प्लम्बर ये कर सकता है, कैसे होगा. You know, all those things are in your mind. It can be done, it is possible, it's like this, like this, like this. It cannot be done in this period of time. This is how the workshop practice is. It becomes very, very handy, and it gives you one of the important outcome of the workshop practice is dignity of labor. You understand, you don't undermine the work input given by any worker. You understand how much effort it requires because you have slogged yourself in the workshop periods in the different shops in your degree program. Yes? So you know it very well. प्रोजेक्ट वर्क का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू गिव, और आई वुड से मेकिंग एन अटेम्प्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग all the theory, all the practicals, all the cognitive and psychomotor abilities in a situation. आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, you are working on that. You are not only using one subject or two subjects, or even if it has not been taught to you, you will like to study yourself, learning to learn skills develop होती हैं, and then you are trying to find a solution to the problem. So you are able to appreciate why so much of theory, why so much of practical, why this content, why you do not know life में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है साइट के ऊपर. Yeah, all these years I had not used my surveying skills, which is a subject in civil engineering. Surveying is a subject. We did a 1 month camp in Kullu to draw the contours, and surveying के 2 हमने subject पढ़े पूरे. I was not able to appreciate इतनी surveying की क्या जरूरत है. Why should we have different kinds of surveying? But so much of advancements now has taken place in the surveying area. I'm just giving you one example. Unless few years back I was challenged. In this institute, I was made an in charge of the new construction works, and the boys hostel, which you see 2 boys hostel and a common room, the multi-purpose hall, the girls hostel, the Mother Teresa home, and the high-tech rooms. Some of the construction was done directly under me. When we were trying to, chief architect has given us the drawings, layout. When we were trying to, ground था पूरा यहाँ पे, वहाँ पे हमने एक बिल्डिंग को खड़ा करना था. We were trying to align this building so that it does not go out of harmony of the existing buildings around it. We were to locate the जो उसकी ड्राइंग थी उसको हमने फील्ड के अंदर एक्चुअली वहाँ पे बिल्डिंग को इरेक्ट करना था. And CPWD was given charge for this, given the deposit works. I was the person who was looking after this project from the institute side, and CPWD has capable engineers. Best of the best brains go there. I mean, NITs के बच्चे, IITs के बच्चे, they prefer to go in the CPWDs. It's very difficult to enter into CPWD department. They were trying to locate the buildings.
कि हम वैसे करें. Now there were buildings on the two sides, three sides I would say, multiple sides पे building exist कर रही थी और इसको हमने layout करना था हमने from drawing sheet to ground. एंड वी वर नॉट एबल. इसको ओरिएंट करते थे इस वॉल को एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की, तो ये ठीक हो जाता है, पर इट विल गो आउट ऑफ रेंज फ्रॉम द अदर बिल्डिंग. सो वी केप्ट ऑन ट्राइंग, हिट एंड ट्रायल, लेबोरेटरी वर्क भी काम आया. और फिर ऐसे ही मेरे को कोई, आई वॉज वेरी गुड इन सर्वेइंग इन माई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. Dr. Narendra Singh, thanks to President Narendra Singh who taught us the civil engineering. And मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा हम ऐसे शिफ्ट करके इसके दूसरे एंड को भी ऐसे शिफ्ट करके देखें, और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको पहले ड्राइंग में हम लोग ड्रॉ करके ऐसे करके देखें. वी वर एबल टू फिट इन वेल. ऑल दिस ईयर्स, for good 30 years, I was not able to appreciate why we should have so much of surveying. But we do not know. हो सकता है यदि मेरे पास ये प्रोजेक्ट नहीं आता, I would have never been able to appreciate so much of effort in the surveying subject. Your students sometimes feel that certain components in the curriculum are useless, but they are not. Who knows when and how many students are put in a particular area of work. Somebody is good in estimating, somebody is good in structure, somebody is good in roads, somebody is going in this, somebody is good in this, and depending on your placement you feel that other subjects are not important, but they are all. We are all making civil engineers, we are all making electrical engineers, we are all making mechanical engineers, or for that matter in different branches. So the practical work का एक objective ये है, the student should be able to apply the concepts, the facts, concepts, principles, all those things, the procedures in a situation. And if they are able to put in A situation, they are able to execute B situation also, C situation also. So that is the basically. Now, the objectives of the practicals is clear in your mind. Drawing के क्या objectives हैं, lab के क्या objectives हैं, workshop के क्या objectives हैं, internship के या industrial training के या project work के क्या objectives हैं. Once you know their outcomes, evaluation becomes very easy. Yes or no? But I have seen, मैं अभी कुछ slides को आगे निकाल लूंगा because I don't want to go in the details, because this particular slides are for a very, very exhaustive sessions on practical works only. But I will focus largely on the evaluation part. My very close friend, dear friend, I just now mentioned, Sunil Dajji, must have talked to you about definition of evaluation by this time. Let us have a very quick recap, and then we will focus on the particular practical evaluation. The systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine to the extent to which peoples are achieving instructional. अभी तक मैंने यही बात करी है. How good they are in able to achieve, inculcate those objectives by which they were offered a particular course or a particular topic even. Yes, this is basically the purpose of the definition of the evaluation. Is he must have talked to you about a very quick evaluation. And he has also talked to you three important aspects of a good test: reliability, validity, and तीनों चीजों के बारे में क्लैरिटी है आपको. Very quickly now I want somebody to tell me what is reliability, what is validity, and what is practicality in a test, because these are very important for all of us to understand they define how good the test is, how good the evaluation is, depending on how good the test is. Okay, what is reliability? Anyone can unmute and share your experience on this. My friends sitting, Neeraj, Vikas, Akash.
रवि, आप भी रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, पहले वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं. Validity basically the given question fetches the same answers from everyone. Means the clarity, the student has clarity in his mind what I need to write. So all of them are going to execute or write the same things. Means validity is clear for the questions. And according to the reliability, for example, there are certain examiners who are checking the same questions, and when they are checking and giving the marks, according after reading that statement, if they have written something वो मेजर करना चाह रहे हैं एक्चुअली में वही मेजर वही कर सकूं जिस फुल क्वेश्चन डाटा इवैल्यूएशन में. Okay, my friends has given some answers, very right, and I'm very happy. Somebody else in the audience who are joining online, please, if you really want to learn, I am not testing your abilities. I am just trying to gather whatever has been taught to you. If it needs to be strengthened, I will strengthen it. I'm just taking a feedback. Reliability, validity, and practicality aspects of which are the important characteristics of a test. They are applicable in the practical testing also. Because the whole concept of testing, evaluation of practical will depend on these three parameters also. Yes, anyone, please unmute yourself and share. सभी क्वेश्चंस जो थे सर एक्सेल वर्क में कौन-कौन से किस तरीके से यूज करने हैं वैलिडिटी के लिए. ओके, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. मैं आई ट्राई टू मेक एन असेंस एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग्स. आई पर्सनली बिलीव इन दिस. सपोज I ask Vikas, Akash, yes, I request Akash to find out the length and the breadth of this room. Simple task है. He requires some measuring tools. I give him a foot rule. जो एक फुट्टा होता है ना, foot rule 12 इंच वाला. I give him that. आकाश को मैंने एक फुट रूल दे दिया एंड ही इज मेजरिंग एंड ही सेज इस रूम की जो लेंथ है वो है 30 फीट, ब्रेड्थ है वो है 27 फीट और 25 फीट. आकाश हैज यूज्ड सर्टेन टूल्स. प्रैक्टिकली ही हैज यूज्ड that instrument and give me the dimension 30 feet by 27 feet. Yes, I'm just hypothetically taking the figures. Now the problem is the calibration on the foot rule was wrong. आकाश, जो मैंने फुट्टा दिया था वो 1 फुट की बजाय 1 इंच ज्यादा बड़ा था. So your dimensions will be all right or no? So your report will be wrong because the calibration, the foot rule, जो tool use करा आपने, जो test item use करी आपने, वही गलत थी. They were not able to measure what it was supposed to. You cannot rely on that. That was not a valid foot rule. Now another problem can happen. I tell Akash to measure with an accurate foot rule and I ask him also कि आप भी measure करिए. If there is a inconsistency between these two measurements, आकाश कहते हैं 30 feet, ये कहते हैं 30 feet 3 inches. वैलिड है तो फिर जो काम किया प्रोसेस में गड़बड़ है. So are you getting the idea what happens? यदि आपका टेस्ट आइटम ठीक है, वो फिर आप चाहे टेस्ट को टेस्ट करें या ये टेस्ट को स्कोर दें या वो स्कोरिंग करें, सेम आने चाहिए. सो यू आर नॉट एबल टू रिलाई अपॉन द स्कोर्स इफ देयर इज ए इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द स्कोर्स. मैं क्या समझूं कि इनका ठीक है या इनका ठीक है.
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. एंड प्रैक्टिकली की बात, जब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट लाइट हियर, चाहे वो नीरज हो चाहे वो आकाश हो, ही विल मेक मिस्टेक्स. यहाँ पे बहुत गर्मी हो, पसीना आ रहा है, वो there can be so many practical reasons by which you can go wrong in your measurements. So the evaluation student has to be reliable. It has to be a valid tool होना चाहिए आपके पास, measuring what it's supposed to measure, the conditions and everything. Now I will not go in the details of this because this has been talked to you by my colleague and you have done exercises. My question very relevant question to all of you is, evaluation के दो एस्पेक्ट हैं, subjective and objective. You can either do a subjective test or you can do a objective test. Yes or no? Yes or no? What is the difference between a subjective test and a objective test? Can anybody tell me? प्रीति आप बताएंगी? प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव में तो इनपुट्स मिल जाते हैं हमें, जैसे ऑप्शंस विल बी देयर इफ वी आर नॉट एक्चुअली हैव द प्रॉपर नेम, इफ इट इज अबाउट अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड समथिंग और का नियर अबाउट भी लेना तो भी फिर वहाँ हो सकता है सर. सब्जेक्टिव में तो अगर थोरोली ही कोई चीज है तभी उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. एंड ऑब्जेक्टिव में क्या है? Objective में sometimes sir help maybe come from our mind if we have learned something not very thoroughly and we have just going through the keywords, then we can go through the answer easily. Okay, somebody has raised the hand. Madam, आप बताइए. Hello. Hello, good morning sir. Good morning ma'am. सर सब्जेक्टिव में तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होती है, बहुत सारा दायरा हो सकता है उसका. ऑब्जेक्टिव में एक फिक्स नॉलेज होती है, एक लिमिटेड वैल्यू ही होगी. Okay. Somebody else? Yes, thank you so much sweetie and thank you so much other ma'am. यहाँ पे भी कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं. हेलो हाँ जी मैम. मैम, शाजिया मैम आप बताइए. तबस्सुम मैम. यस मैम, यू आर ऑडिबल मैम, बोलिए. हेलो. यस तबस्सुम मैम आप बोलिए, यू आर ऑडिबल. ओके सर. सर ऑब्जेक्टिव में हमारे पास कुछ इनपुट्स मिल जाए. यस सर. सर ऑब्जेक्टिव में कुछ हमें इनपुट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो आंसर तभी कर सकती है जब श्योर आंसर हो, नहीं तो उसमें मार्क्स पूरे चले जाएंगे. लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है कि अगर हमें कुछ मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अगर कुछ ही नॉलेज है तो बच्चा कुछ लिख सकता है. Somebody else has also raised the hand. Somebody else want to say something or should I proceed further? Maximum number of content covering हो सकते हैं objective से and subjective में. Okay. So different answers. Yeah. ऑब्जेक्टिव इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, अगर इसमें आंसर है तो फुल मार्क्स, नहीं है तो नेगेटिव. Okay. हेलो. For subjective में you give marks even for the wrong answer. No sir. Okay. So this topic is very interesting. I can have full debate on this topic and I have done a lot of research on this topic also because student evaluation one of my very favorite topic. मैं अभी आपको एक बात, after 5-day program only on the evaluation and setting up question paper, you should be very clear on subjective and objective testing. All your answers are right, but let me clarify it so that it remains in your mind. If I have a subjective test and I give it to Akash for the scoring, test मैंने दिया, बच्चे ने आंसर लिख दिए, I give Akash the answer sheet. If it is a subjective test, let us say he gives 80 out of 100. The same answer sheet, after hiding Akash's scoring, I give to Vishal, Neeraj. आपके भी 80 मार्क्स होंगे, may or may not be. So the scores
obtained by the student is not based entirely on what he has written, but based on, it is subject to, based on or subject to who is marking my paper. Yes, sir. Any objective test, if I give to Neeraj uh, or to Akash, it will be same. Same, yes, sir. This is the major difference. Objective tests are highly reliable, highly valid, but then it fails when it comes to higher order of learning abilities. We cannot measure every kind of ability by using a objective test. आपकी वेल्डिंग करवाई, आपने कारपेंटरी कराई, आपने कोई कोई लेबोरेटरी में काम करवाया, दैट कैनॉट बी मेजर्ड बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट. वी हैव टू गो टू द subjective test. Subjective tests are little low in reliability and validity, but we can increase their reliability and validity, which are essential conditions for a good testing. Are you getting my point? Yes. Ma'am, it is clear to you, Tabassum ma'am? Tabassum ma'am? Okay, I think she is offline now. Anyway. Hello. Hello. Is it clear Hello? to you? Is it clear to you now? Yes, sir. It is called subjective test because it is subject to who is doing it. Yes, sir. Yes, sir. We are Depend upon. measuring the student capability, but its student capability can just score, and that depends on who is testing my test. Yes, sir. And if the same test is given to the student, let us say few days back, after that test, there will be again, यदि मैं विकास को ही देता हूँ दोबारा से, after a few days, subjective test में again there will be a variation even with the same evaluator. Yes, sir. Yes. Objective test is so good in reliability and objectivity that even the machines can do it. आजकल हम लोग OMR sheet use करते हैं. We don't require Vikas or Akash or Vishal or Tabassum ma'am for that matter. Machine will give the score. Highly reliable, but we have to go for the subjective testing, and in the practicals we have to go for the subjective test. We can increase the validity and reliability. How can we do that? We can incorporate objectivity in the subjective testing. ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की क्या क्वालिटी है? हाईली रिलायबल एंड वैलिड है. अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू गो फॉर द सब्जेक्टिव टेस्टिंग. एक बच्चे को आपने प्रोजेक्ट करा, आपने कुछ नंबर दिए, इन्होंने कुछ और नंबर दे दिए. इन ऑर्डर टू मैच द स्कोरिंग बिटवीन आकाश एंड विशाल और रवि, हम लोग उसमें ऐसे कंपोनेंट्स डाल दें इवैल्यूएशन के, not much of variation is there. We are increasing the objectivity, we are increasing the reliability and the validity. Yes or no? Yes, sir. How can we do that? Up to now, largely in most of the institutions, the teachers evaluate the practical work, may it be drawing, may it be laboratory, may it be workshop, may it be project work. It is subjective. बच्चे की शक्ल देख के समटाइम मैंने एक्सपेरिमेंट करा ही नहीं है, मेरी रीडिंग्स के बेस के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर आपने दे दिया. किसी ने एक्सपेरिमेंट करा, उसकी रीडिंग गलत आ गई, उसको अपने कम नंबर दे दिए. यस और नो? चंडीगढ़ में एक मार्केट है सेक्टर 18 में, माय फ्रेंड सुनील दत्त जी नोस, वहां पे बने बनाए प्रोजेक्ट मिल जाते हैं. आप 200 रुपए के 500 रुपए का प्रोजेक्ट बनवा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी तरह का भी, प्लीज. यस सर नो? उसके नंबर बहुत हैं बिकॉज वो किसी प्रोफेशनल ने बनाया, आपने बहुत अच्छे से मेहनत से करा, आपके कोई नंबर ही नहीं आ रहे. सो इन द प्रैक्टिकल्स, in the practical examinations, in the practical evaluation, it is important. I am going to use two terms here. One is your product evaluation. आपका फाइनल आंसर कैसे कौन सा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आपकी फाइनल रिपोर्ट क्या है, रीडिंग्स क्या है, प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप है, या आपकी ड्राइंग जो फाइनल है वो कैसी है. मोर इंपॉर्टेंटली द प्रोसेस evaluation, which we are not doing or doing at a very less. There is no score,
देयर इज नो स्पेसिफिकेशन ऑफ टेबल्स दैट इसके स्टेप के इतने नंबर है, इसके स्टेप के इतने नंबर है, इसके स्टेप के इतने नंबर। थ्योरी में भी अब तो करते हैं ना हम लोग, स्कोरिंग स्टेप्स के देते हैं। इसी तरह से इफ वी आर एबल टू ऐड मोर पैरामीटर्स नॉट ओनली ऑन द प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बट द प्रोसेस इवैल्यूएशन। मैंने एक्सपेरिमेंट करा, मेरी फाइनल रेटिंग गलत हो सकती है बट मेरा प्रोसेस पूरा ठीक था, मेरे को 0 नंबर मिल रहे हैं। फाइनल प्रोजेक्ट के फाइनल ड्राइंग शीट के नंबर, मैंने ड्राइंग के सारा कुछ ठीक करा लेकिन उसे कोई नंबर ही नहीं है। यस और नो? Are you agreeing with me, my dear friends? If we are able to add more parameters in the evaluation of the practical or in any, for that matter, even theory में भी subjective testing भी है, यदि theory में भी, if we add इतने, इसके लिए इतने नंबर, इसके इतने नंबर, you are adding more parameters, you are going towards the objectivity, you are going to increase the validity and reliability. फिर मैं वो आंसर शीट विकास को देता हूँ, आकाश को देता हूँ, या रवि को देता हूँ, या नीरज को, या तबस्सुम, या किसी और को देता हूँ। सो आपको, आपके पास वो पैरामीटर फिक्स हो गए, सो यू आर इंक्रीजिंग द, दिस इज द की, दिस इज द की। नाउ मैं इसके आगे डिटेल में चलता नहीं है, बट लेट मी टेल यू, जो मैंने अभी कहा आपको, दिस इज अ स्पेसिफिकेशन, आई एम जस्ट, दिस इज अ सजेस्टिव, this is just a suggestive, you can discuss in your departments and make a chart. Process drawing sheet है, उसके process evaluation के 20 मार्क्स, प्रोडक्ट जो फाइनल ड्राइंग बनी उसके 30 मार्क्स, जनरल बिहेवियर, yes you can take the pictures, you can take the screenshots, जो आपके जनरल बिहेवियर है, इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंटली ड्राइंग बनाई, अपने नीटनेस, क्रिएटिविटी, जो इफेक्टिव डोमेन के पार्ट हैं उसके 20 मार्क्स, वाइवा वोसे के 30 मार्क्स। वाइवा वोसे होता नहीं है कभी ड्राइंग शीट के ऊपर। एवरी ड्राइंग विच यू मेक शुड हैव ए वाइवा वोसे। हाउ इज एबल टू मेक, रीड एंड इंटरप्रेट, जो आपके ऑब्जेक्टिव थे। दिस इज ए सजेस्टिव एंड मेनी इन मेनी ऑफ द कॉलेजेस दे डू दिस नाउ आफ्टर माय इनपुट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। सो अभी तक क्या है, जहां पर जो नंबर 2 पे लिखा है मैंने, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, क्वालिटी ऑफ ड्राइंग, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, उसके 100 मार्क्स हैं। What I am suggesting here is 20 for the process, how he is making the drawing, वो टोपो मार के नहीं बना रहा उसको ड्राइंग की सारी स्किल्स करके बना रहा है, एंड जनरल बिहेवियर एंड द, so you, instead of having one parameter final drawing, you have how many parameters? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, you have added 15 to 16 parameters. If 16 parameters for one drawing के बेस के ऊपर आपको स्कोर करना है, there will be very less variation between the scores. And it is, this tool is very well calibrated. जो calibration फुट रूल के ऊपर दी थी हमने, उसको कैलिब्रेट कर दिया अच्छे से। With me? Similarly, now my job becomes very easy. लेबोरेटरी वर्क के एम्स क्या हैं, मैंने सब कुछ बात करी आप लोगों से। इसमें भी प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन की बात करेंगे। प्रोसेस, लेबोरेटरी वर्क में जो उसके ड्राइंग है या जो उसकी सर्किट डायग्राम है, जो प्रोसेस है, वो सारा कुछ, हाउ एबिलिटी टू कैरी आउट द, जो उसने स्टेप्स फॉलो करने थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसने फॉलो करे कि नहीं करे, हैंडलिंग ऑफ द, हाउ इज हैंडलिंग द इक्विपमेंट, हाउ इज हैंडलिंग द मटेरियल्स, how he is observing and making the record of the things, ability to follow the BIs. You can add and delete certain parameters in each component. Process may be, product may be, and general behavior may be viva voce. But इसमें practical work में, laboratory में मैंने कहा 40 marks should be for the process evaluation. आपकी रिपोर्ट तो बंदे सीनियर से भी ले लेते हैं प्रैक्टिकल मैनुअल में भी रिपोर्टें बनी पड़ी हैं लोगों की पिछले से। सो यू आर एडिंग मोर पैरामीटर्स, यू आर एडिंग मोर ऑब्जेक्टिविटी, यू आर एडिंग मोर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन योर सब्जेक्टिव टेस्ट। अदरवाइज इट इज सब्जेक्ट टू द टीचर्स। एक आपने, आपके पास रिपोर्ट आ गई, आपने उसको देख के नंबर दे दिए, वो दैट मे नॉट बी रिलायबल, उसकी कैलिब्रेशन ही गलत होगी आपकी। तो
Yes. Similarly, for the workshop practice, इसके लिए मैंने जो suggestive है ये, you can discuss among yourself in your departments. मैंने कहा कि जो वर्कशॉप है उसमें जो एंड प्रोडक्ट बना आपका, जो जॉब आप बनाते हैं किसी भी, चाहे वो कारपेंटरी की जॉब है, चाहे वो प्लम्बिंग की जॉब है, चाहे वो वेल्डिंग की जॉब है, चाहे वो फिटिंग की जॉब है, वो जॉब के 50 मार्क्स more on the product, but you give 20 marks for the process and 10 marks for the behavior and 20 marks for the biology. So how many parameters now? In each of the practicals, we are now having 15 to 20 parameters. You can add and delete the parameters depending on your practical which you are doing. चाहे वो ड्राइंग है, चाहे वो लेबोरेटरी वर्क है, चाहे वो आपकी वर्कशॉप है, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क है. यस, वाइवा वोस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाइवा वोस से भी आपको पता चलता है कि बच्चे ने उसके. हेलो बस. यस मैम. सर, आई एम वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट. यस मैम. सर, आई नो व्हाट इज द प्रोसेस इवैल्यूएशन, इसमें क्या क्या आएगा? ये प्रोसेस इवैल्यूएशन में आप देखते हैं एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट. उसकी कोई ड्राइंग देंगे आप, फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर एंड प्रोसेस, मैनिपुलेटिंग स्किल्स, जो वो हैंडल कर रहा है मटेरियल्स को, मशीन्स को या और चीजों को, ऑब्जर्वेशंस कैसे थे, सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इंजेन्युइटी इन यूजिंग द मटेरियल्स, टाइमली कंप्लीट कर रहा है, एबिलिटी टू फॉलो द बीआई स्टैंडर्ड्स. BIS standards. BIS standards. There is always a standard for every product, and there is a process standards also for every product. वो आप बच्चों को, हमारे one of the biggest weakness in our students is कि they are not familiar with the BIS standards. Yes sir. तो वो उसकी एक कंपोनेंट रखेंगे हम यहाँ पे, मैंने जानबूझ के ऐड करा कंपोनेंट प्रोसेस में, so that the students are familiar with कि ये BIS, ये वाली फाइल BIS स्टैंडर्ड किसको मीट करती है, ये टूल किसको मीट करता है, ये जो प्रोसेस है, इफ द प्रोसेस इज राइट, प्रोडक्ट लाइक इज लाइकली टू बी ऑल राइट. ओके. ओके सर. जो प्रोजेक्ट है उसके तो मैंने बहुत, आई गिव 5-day program only on the project work, 5 days program. It is so important, my dear friends. Nowadays, many engineering colleges and polytechnics are giving emphasis on the internships and other things. लेकिन इसकी evaluation का चक्कर है, इसको छोड़ देते हैं अपन पहली slides को. Let us go to the evaluation part of it. Instead of giving full marks only on the final report or the product, I suggest planning के ऊपर 10 marks, execution as he is doing the project 30 marks, quality of product जिसके ऊपर अभी तक आप 100 marks दे रही हैं, I am suggesting only 40 marks, presentation and viva voce के ऊपर 20 marks. I have added 4 components, 4 parameters, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मार्क्स की. प्लानिंग मीन्स कि हाउ प्लान्ड, उसकी जो प्लानिंग में आई विल इन 4 पैरामीटर्स की मैंने फर्दर डिवीजन करी, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क इज ए चंक ऑफ टाइम स्पेंड टुगेदर फॉर 2 months और 6 months बाय द स्टूडेंट. प्लानिंग में आप क्या कुछ देखती हैं, ये चीजें देखते हैं. See how many parameters we have added, 4. और जो फर्स्ट कंपोनेंट 10 मार्क्स के लिए you have this kind of parameters. So what you have done is you have brought about objectivity in the subjectiveness. You have added reliability and the validity. ये फिक्स नहीं है पैरामीटर्स, यू कैन ऐड एंड डिलीट. मैं रिपीट कर रहा हूं सो दैट यू डू नॉट थिंक कि मेरे प्रोजेक्ट में तो ये एप्लीकेबल नहीं है. बट आई हैव डन लॉट ऑफ studies interacting with most of the faculty members from polytechnics and engineering college. Then I decided about this parameters myself. Then execution में क्या देखनी है आपने, फर्दर पैरामीटर मैंने ऐड कर दिए. पहले तो 4 पैरामीटर, इन ईच पैरामीटर 30 मार्क्स के लिए, फिर फर्दर पैरामीटर ऐड कर दिए हमने. इंफॉर्मेशन और सेंस ऑफ इंक्वायरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन और इफेक्टिवनेस इन टीम, रिसोर्स इफेक्टिवनेस, मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट, टाइम एंड इंफॉर्मेशन. You may add more parameters. Yes.
Yes. One of the important thing in planning of the, I'm very happy that you asked me this question. One of the very important component, if it is a group project, it can be single project person or it can be group projects, then you must be able to distribute depending on the strength of individuals in a group. Let us say 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, ये स्टूडेंट ये देखेगा, ये स्टूडेंट ये देखेगा, ये स्टूडेंट ये देखेगा, and assign the responsibility in different individuals in a group is important. Yes or no? Somebody is very good in theory, somebody is very good in drawing, somebody is very good in interaction with the people, somebody is very good in psychomotor. So depending on the group, individual strengths. ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं करेंगे फिर उस काम को, उसमें लगते ग्रुप, but then you will come to know about it. Then the product is a main thing in the project work. I have added 3 plus 3 6 plus 5 11 parameters. इस 40 मार्क्स के लिए ये कुछ देखेंगे. You can add and you can delete certain parameters depending on your project. And then Viva वो से finally 20 marks. From the Viva वो से you will be clear कि इसने actually कुछ काम करा कि नहीं करा. Whatever theory, whatever practical he has used in arriving the solution of the problem or making an attempt to find the solution of a problem, that will be revealed to you through the presentation. उसकी communication skills कैसी हैं, उसकी reasonability कैसी है, उसकी PPTs, so many skills will be developed in a project work. Yes, and then you are testing those things also. I have not divided the Viva in presentation, but there are there are at least 15 to 20 parameters in this. Because the parameters which you have measured in the planning, in the execution, and in the product will find part of the final presentation or the evaluation. Friends, मैंने बहुत broadly आपको बताया कि practical components, चाहे वो drawing का है, चाहे वो workshop का है, चाहे वो laboratory का है, चाहे वो project work का है, how can we improve the evaluation of practicals in our everyday teaching learning process. Any questions in your mind, any suggestions, any comments from your side, please feel free to ask questions or give your comments on this. Sometimes rubrics जो है अब बोर्ड की तरफ से डिफाइन होके आने शुरू हो गए. बहुत अच्छी बात है. If they are defining the rubrics, but I would suggest in your institute try to work on that. That one cannot be same for each practical work. It cannot be for each practical. उन्होंने एक यूनिवर्सल सा बना के भेजे कि आपने यही करने हैं. Actually क्या है कि I shouldn't be saying so publicly, but actually क्या है, because we are talking about academics, the teacher concerned should be involved in preparing the rubrics. यदि मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, मेरे rubrics मेरे practical के लिए practical to practical भी vary कर सकते हैं. It can vary. It should. तो अपने लेवल को चेंज कर दो. आप अपने at least internal evaluation के लिए तो कर ही लीजिए. वो एक्सटर्नल के लिए भी डिफाइंड है. But defined है फिर तो you have to follow that. वो बोर्ड से बन के आते हैं, आपको फिर you have to go by that. But मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, जो इंटरनल असेसमेंट है उसको तो आप अपने rubrics बना के ऐसे कर सकते हो ना बेटे. आप you can bring about more objectivity in your this thing. Any other? Yeah. Nowadays, we are having American terms to define certain. मैंने आपको बहुत simple तरीके से बताने की कोशिश करी कि how can we evaluate the practical works. मेरे को बड़ा मन में लगता था कि मैंने इसको कम नंबर दे दिए, इसको ज़्यादा नंबर दे दिए, हो सकता है इसने ज़्यादा अच्छा काम करा हो सकता है इसने कम अच्छा काम करा हो. वो जो मेरे मन में दुविधा है एज ए टीचर, एज ए डिलेमा है मेरे माइंड में, उसको मिनिमाइज करने के प्रयास करा हमने इन दिस सेशन. एंड वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट मोर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन अवर स्कोरिंग आल्सो, इन अवर टूल्स. अगर कोई बच्चा सर इंटरनल में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और एक्सटर्नल आउटसाइड से है,
तो उस टाइम पे इसकी जो अलग से रूब्रिक्स एक्टिविटी रहेगा चाहिए इंटरनल अटैक्स ना करें। वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके. देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू स्टूडेंट एवेल्युएशन. तो वो एक सैम्पलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है. आपने 10 एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकते एक्सटर्नल, बट इंटरनली आपने देखा कि 10 में से 9 अच्छे कर रहे हैं. 9 के उसने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करे, या 9 जो शॉप्स थी उसमें अच्छा काम करा उसने. हो सकता है इट कैन बी मिस फॉर्चुनेट कि उसके पास 10 फाइनल में 10वां आ गया हो. बट देन if they, that's why we always say there should be always an internal attached with external. Project work में the student is not working with you, he is working with some industry sometime away from you. So उसमें वहाँ का जो बंदा है he knows कि उसने क्या काम करा. You can make a judgment on that. Largely nowadays tools are available and also through the presentation and viva से. But he should be able to tell you कि इसने कहाँ पे कैसे कैसे अच्छा काम करा. In practicals, your consistency, your sessionals are very, very important.